Students, today we will discuss another important topic, and that is parturition. So what is parturition? Parturition is actually the delivery of the fetus. When the fetus comes out, that process is known as parturition. So just see here, the process of delivery of fetus is called as parturition. Clear? The expelling out of the fetus is known as parturition, and it is a complex process. Here neurons and endocrine system is involved. So it is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Clear? Neuroendocrine mechanism means here neurons are also involved and certain hormones are also involved. Now the hormones which are involved is corticotropin releasing hormone. My dear student, this question has been asked many times. Name the various hormones which are involved in parturition process. So you have to remember the name of these hormones. Clear? So as I told you, it is induced by a complex neuroendocrine mechanism where neurons and endocrine system is involved, involving many hormones. Now those hormones are, first is CRH, that is corticotropin releasing hormone. Remember, corticotropin releasing hormone CRH, which is secreted by the placenta. So question can come, name the hormone which is secreted by the placenta. So there you can write down corticotropin releasing hormone. The second is cortisol. It is secreted by adrenal cortex and it is required for the preparation of to prepare the lungs of the fetus. Estrogen, oxytocin, very important hormone. Relaxin, which is also secreted by the placenta. So just remember the name of these hormones. These hormones is written in your NCERT. Read the lines of the NCERT, clear? So the hormones are corticotropin releasing hormone, cortisol, estrogen, oxytocin and relaxin. These hormones are involved in the process of parturition. Okay, next we have to study the mechanism, how the process of parturition takes place. But my dear students, just remember, during the parturition, the level of the progesterone decreases and the level of estrogen increases. During the whole gestation period, clear, during the pregnancy, I have told 100 times that the level of the progesterone is high. Progesterone is the hormone which is required to maintain pregnancy. But at the end of the gestation period, during the parturition, what happens? The level of progesterone will decrease and the level of estrogen will increase. Just remember this. Now what happened? The fully developed fetus, when the gestation period is almost over, the fetus is fully developed and the placenta, they sense the signal. Clear? So first, if the mechanism is asked, you will write the signals will be sent by the fully developed fetus and placenta. Clear? And due to these signals, what will happen? There will be mild contraction in the uterine wall. Clear? So there will be mild uterine contractions. So first what happened? The signals were sent by the fully developed fetus and the placenta. As a result, what will happen? There will be mild uterine contraction. This mild uterine contraction is called as fetal ejection reflex. So question can be asked, or it can be framed like this: what is fetal ejection reflex? So you will say that the fully developed fetus and the placenta, they will send the signal, and what happens? There will be the mild uterine contraction, which is known as fetal ejection reflex. Clear? Now what happens? This mild uterine contraction, it will activate the neuroendocrine system. They will activate the system, and as a result, what will happen? There will be the release of the hormone oxytocin from the pituitary gland. The pituitary gland will secrete the hormone oxytocin by the maternal pituitary. Clear? So the maternal pituitary will secrete the hormone oxytocin, due to which the oxytocin acts on the uterine muscles and it will cause more stronger contraction. Clear? When the oxytocin will be released by maternal pituitary, so what will happen? There will be more stronger contraction. Now what will happen? Further oxytocin will be secreted, more oxytocin will be secreted, the contraction will be more stronger, clear, and it will cause more dilation of the cervix.
the birth canal and there will be expulsion of the baby out from the uterus through the birth canal. अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखेंगे बेटा. सबसे पहले क्या होगा, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, फीटस फुल्ली डेवलप्ड है, अब से बाहर आना है, तो जो फीटस है और जो प्लेसेंटा है दे विल सेंड द सिग्नल्स. ठीक है, वो सिग्नल सेंड करेंगे. जब वो सिग्नल सेंड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन. जो यूट्रस है, यूट्रस में क्या होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा. इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. क्लियर. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द मैटरनल पिट्यूटरी इट विल सीक्रेट ऑक्सीटोसिन. जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करेगी, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेगी. ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा. जब और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो व्हाट विल हैपन, जो सर्विक्स होती है वो डायलेट होगी. फिर और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्विक्स में और ज्यादा डायलेशन होगा. एंड लास्टली जो सर्विक्स है कितनी डायलेट हो जाती है, अबाउट 10 सेंटीमीटर. एंड व्हाट हैपेंस, देन द बेबीज कम आउट फ्रॉम द बर्थ कैनाल. क्लियर. एक छोटा सा मैंने आपको चार्ट बना रखा है, यहाँ पे देखेंगे हाइपोथैलेमस है. सिग्नल कहाँ गया, हाइपोथैलेमस में. मैं बार बार बोल रही हूँ, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा ये क्या करेंगे, दे विल सेंड द सिग्नल. ठीक है, सिग्नल कहाँ गया, हाइपोथैलेमस में गया. हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल सीक्रेट ऑक्सीटोसिन. दिस ऑक्सीटोसिन विल सीक्रेट और इट विल इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कैल्शियम आयंस. इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है. एंड ऑक्सीटोसिन व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन बार बार इंक्रीज होगा. एंड लास्टली जो बर्थ कैनाल है फुल्ली क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड द बेबी विल कम आउट एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्टुरेशन. याद रखेंगे बेटा कि जो मेन पार्टुरेशन हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन. जो मेन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कौन सा हार्मोन है, तब तो आप ये सारे हार्मोन्स लिखेंगे. बट अगर पूछा है मेन पार्टुरेशन हार्मोन तो वहां पे आप लिखेंगे ऑक्सीटोसिन. दूसरा, जो लेबर पेन होता है डिलीवरी के टाइम पे मदर को जो पेन होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन. And after the birth of the baby, जो milk injection होता है that is also due to oxytocin. Clear? So these are some of the points which you have to remember. ये mechanism अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है. तो अभी के लिए इतना ही. Thank you.